Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is single phase half wave controlled rectifier, that is HWCR, with resistive load. First, we will discuss the meaning of phase controlled rectifier. From exam point of view, you may expect the question like this: what is a phase controlled rectifier? See, in earlier subject, you have studied the normal rectifiers using diodes. So, when you are using a diode rectifier, then it is basically uncontrolled rectifier. But when the diodes are switched with thyristors, then it becomes phase controlled rectifier, that is PCR. In this case, the output voltage can be controlled by changing the firing angle. अब हम लोग फायरिंग एंगल का थोड़ा कंसेप्ट लर्न करते हैं. व्हाट इज द फायरिंग एंगल? एक सोर्स वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ किया है. दिस इज अ साइनोसोडियल वेवफॉर्म. दिस इज ग्राफ ऑफ वीएस वर्सेस ओमेगा टी. कोई भी थायरिस्टर ऑन करना है, एससीआर ऑन करना है, सो देर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस. फर्स्ट इज it must be forward biased, means SCR must be forward biased, and second condition is gate signal must be applied between gate and cathode terminal. So this is the supply voltage Vs. It is graph of Vs versus omega t. This is the waveform of output current, that is I0. देखो ideally ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है जो जीरो से स्टार्ट होता है, ये पाई का वैल्यू है, दिस इज 2 पाई एंड देन साइकिल रिपीट्स. तो 0 टू पाई के केस में कंडक्शन होना चाहिए. दिस इज द आइडियल सिचुएशन. बट इन केस ऑफ एससीआर गेट सिग्नल मस्ट बी अप्लाइड. ये जो ग्राफ है, दिस इज आईजी वर्सेस टाइम पीरियड. दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ गेट पल्स which we are going to apply to the gate terminal of SCR. तो यहां पे सपोज हम लोगों ने गेट पल्स अप्लाई किया है, सो इस इंस्टेंट पे कंडक्शन स्टार्ट होगा. सो आउटपुट वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस. दैट मीन 0 टू अल्फा. ये जो वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इस एक्सिस पे ओमेगा टी है. ये जो वैल्यू है 0 से लेके इस पॉइंट तक, दिस वैल्यू इज कॉल्ड अल्फा, विच इज अ फायरिंग एंगल. मतलब इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर एंगल पे हम लोगों ने गेट पल्स अप्लाई किया. आफ्टर दैट कंडक्शन ऑफ एससीआर स्टार्टेड. सो आउटपुट वेवफॉर्म इज लाइक दिस. अब देखो यहां से पाई से 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल है, सो एससीआर विल बी टर्न्ड ऑफ. अगेन फ्रॉम 2 पाई पॉजिटिव साइकिल बिगिंस, लेकिन गेट पल्स अप्लाई होना चाहिए. सो गेट पल्स इज अगेन अप्लाइड एट सम एंगल. दिस इज अगेन एंगल अल्फा. सो अगेन after this angle the conduction start. This is the concept of firing angle. So the firing angle is the phase angle. It is basically a phase angle of the voltage at which SCR is turned on. So this is about the phase controlled rectifier. Next part is HWCR, that is half wave controlled rectifier. From the exam point of view, you may expect the question like this: draw the circuit diagram of half wave controlled rectifier and explain it with respect to relevant waveform and comment on the power factor. So this is the corresponding circuit diagram. At the input side, we have shown single phase AC supply. So this is single phase half wave rectifier. So we are going to apply single phase AC supply. This is the transformer. At the secondary side of transformer, we have connected one SCR, that is thyristor. This is anode terminal, cathode terminal, and this one is the gate terminal of SCR. At the output side, we have connected R, that is resistance, as a load. So it is resistive load. Voltage across this output resistance is DC output voltage denoted by V0. Corresponding current flowing through this output resistance R is load current IL. अब देखो, अभी अभी हमने एक कंसेप्ट लर्न किया, कंसेप्ट ऑफ फायरिंग एंगल. बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड एससीआर विल बी कंडक्टिंग इफ यू विल फॉरवर्ड बायस इट. एक कंडीशन हो गया. सेकंड कंडीशन, इफ यू अप्लाई गेट पल्स टू द गेट टर्मिनल ऑफ एससीआर. सो दीज आर द टू कंडीशंस. देन एंड देन ओनली एससीआर विल स्टार्ट कंडक्टिंग. नाउ लेट अस डिस्कस द वेवफॉर्म्स. This is the graph of Vg versus omega t. Vg is the gate voltage. These pulses, we are going to apply these pulses to the gate terminal of SCR. This particular angle यहाँ पे 0 है, so this value is alpha. So this particular angle is alpha, which is called firing angle. इसको delay भी बोलते हैं. So this is the firing angle.
Next is graph of Vs versus omega t. Vs is the source voltage. Actually ये ideal sine wave का waveform है. We know that in case of a sine wave there is a positive half cycle, then negative half cycle. Ideal values are 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. And we know that after 2 pi the cycle repeats. So this is the ideal waveform of source voltage. इसका जो maximum value है that is denoted by Vm, maximum value of source voltage. Now once again what we discussed, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है. ड्यूरिंग दिस लुक एट द डायग्राम. पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर यहाँ पे एससीआर को अप्लाई करेंगे, एससीआर विल बी फॉरवर्ड बैच, बट it is not only sufficient condition. What is another condition? We should apply the gate pulse. तो यहाँ से actually positive half cycle start होता है. So SCR is forward batched, but from 0 to alpha, जैसे इस डायग्राम में देखा है, this is graph of output voltage versus omega t. 0 to alpha, यहाँ पे VG देखो, VG 0 है क्योंकि हम लोग VG मतलब गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एट द वैल्यू अल्फा. तो 0 टू अल्फा ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है अल्फा का. 0 to alpha, even if SCR is forward batched, it will not start conducting. So in this waveform, which is the waveform of output voltage, 0 to alpha, there won't be any conduction. Now at alpha we are applying gate pulse. तो अल्फा के बाद यहां से इसके बाद जो भी सोर्स वोल्टेज का वेवफॉर्म है, इट विल बी ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट एज इट इज. वी मे वेल ट्रीट इट लाइक दिस. जैसे एससीआर फॉरवर्ड बायस हो गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया है. एंड whenever the gate pulse is applied, SCR will start conducting. Whenever it is conducting, it will be treated as a closed switch like this. It is treated as a closed switch. इसका मतलब इनपुट में, इस सेकेंडरी ऑफ आउटपुट में जो वेवफॉर्म है, दिस सेम वेवफॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट. तो ये जो वेवफॉर्म है, ये पार्ट, दिस विल बी ऑब्टेन्ड एज इट इज. नाउ ऑब्जर्व दिस सोर्स वोल्टेज फ्रॉम पाई टू 2 pi. This is negative half cycle. Whenever negative half cycle is given, SCR will be reverse biased. It will not be conducting. तो यहाँ पे कुछ कंडक्शन नहीं आएगा. 2 pi से फिर से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है, बट at 2 pi we are not applying any gate pulse. Gate pulse is again applied after certain angle alpha. This angle is angle alpha. तो इसका मतलब है 2 pi पे SCR फॉरवर्ड बायस होगा लेकिन कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा. कंडक्शन कब स्टार्ट होगा? Again after some angle alpha. So at the value 2 pi plus alpha, this conduction starts. ये जो रीडिंग से बना है. So at the output you are getting this waveform जहां पे मैंने on लिखा है. So these are on pulses at the output. As we discussed, whenever SCR is conducting by satisfying both the conditions, it is forward biased and we are applying gate pulse, then it is acting as a closed switch. इस पार्ट में जैसे देखो, पाई से लेके 2 pi प्लस अल्फा तक, मतलब इस वैल्यू तक, ये जो वैल्यू है, दिस इज 2 pi प्लस अल्फा. फ्रॉम पाई टू 2 pi प्लस अल्फा, SCR इज नॉट इन कंडक्शन मोड. इन दैट केस it can be shown like a open switch. So in this case, from pi to 2 pi plus alpha, SCR will be acting as a open switch, or it is open circuited. Next is graph of IL, that is load current versus omega t. It is very much similar or exactly similar to that of V0, only amplitude will be slightly changed. ये जो maximum value है V0 के waveform में, this maximum voltage is Vm. Maximum value of current in the output waveform of this IL is Im. So these are the corresponding waveforms related to half wave controlled rectifier. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा को कोई वैल्यू मेंशन नहीं किया है. यू कैन वेल चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो एज यू गो ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, कंडक्शन कैन बी चेंज्ड. दैट मीन्स कंडक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो इट इज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. व्हाई इट इज हाफ वेव? वेरी सिंपल लॉजिक. This conduction is taking place only during positive half cycle, so it is half wave, and this conduction can be controlled with the help of firing angle alpha, so it is half wave controlled rectifier. Now let us discuss performance analysis of single phase half wave controlled rectifier. First part is average or DC output voltage. It is denoted by VDC. याद कैसे रखना है? ये average value है, and average is for entire cycle, that is for positive and negative half cycle. So it is 1 by 2 pi, and
we are going to take average. That means we have to take summation. That means in another language, we have to integrate it from 0 to 2 pi v0 d theta. Now one important thing, v0 is vm sin omega t. सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे v0 is vm sin theta. In place of omega t, I am assuming notation theta, but and the same thing. But we have discussed while studying the waveforms that conduction of SCR is not from 0 to 2 pi, rather it is during only positive half cycle and from alpha to pi. So limits of integration in this case will be from alpha to pi. Now let us put the value of V0. So I can write it like this. VDC is equals to 1 by 2 pi integration alpha to pi. Value of V0 is Vm sin theta. So it is Vm sin theta d theta. If you are using this equation, Vm sin omega t, then it will be Vm sin omega t d omega t. One and the same thing, I am using notation theta. Vm is constant, it can be taken out. So it can be written as Vm upon 2 pi integration alpha to pi sin theta d theta. So it is Vm upon 2 pi. We know that integration of sin theta is minus cos theta. Limits are alpha to pi. Let us put the limits. So VDC is equals to Vm upon 2 pi. Upper limit is pi, so it will be minus cos pi minus lower limit. Already minus sign is there and we are using one more minus sign. Minus minus become plus, plus cos lower limit alpha. We know that cos pi is minus 1. Do remember this. Cos pi is minus 1. Minus of minus become plus. So वैल्यू ऑफ यहाँ पे लिखता हूं मैं, वैल्यू ऑफ वी डी सी इज इक्वल्स टू, ये जैसे मैंने बताया cos pi is minus 1, minus minus become plus, so it is Vm upon 2 pi into 1 plus cos alpha. This is the value of average or DC output voltage. Next parameter is RMS value of output voltage. ये VDC का फॉर्मूला है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. RMS means root mean square value. So from this I can write formula of VRMS, that is root mean square value. Root mean square means we are going to take square root of this value. So it becomes square root of 1 by 2 pi. Then take square of this V0. So it is integration limits remain same, alpha to pi V0 square d theta. This is the formula to calculate the RMS voltage. Now put the values. So I can write VRMS is equals to square root of this 1 by 2 pi as it is, integration alpha to pi V0 square. We have the value of V0, Vm sin theta. So I will write it like this, Vm square sin square theta d theta. Now this integration limits are alpha to pi and Vm square is constant, so it can be taken out. So we can write this equation as Vm square. This Vm square term is taken outside the integration upon 2 pi integration alpha to pi sin square theta d theta. Now to obtain the integration of sin square theta, we have to make use of one identity. Sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. So let us make use of this identity. So this equation can be written as square root of Vm square upon 2 pi integration alpha to pi 1 minus cos 2 theta upon 2. Variable of integration is d theta. Now this 2 is again constant, it can be taken out. So I will directly write, I will cancel out this 2 and I will write over here 4 pi. Let us perform the integration separately. So this can be written as square root of Vm square upon 4 pi integration of 1 d theta, limits are same, alpha to pi minus second integration again same, alpha to pi, then this is cos 2 theta d theta. Now we have to separately do the calculation of this integration.
अभी इंटीग्रेशन सेपरेटली करते हैं। जैसे देखो इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ। 1d थीटा, इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा थीटा, मतलब ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे, थीटा लिमिट्स आर अल्फा टू पाई, सो इट बिकम्स पाई माइनस अल्फा। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन। सेकेंड इंटीग्रेशन का आंसर आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, and limits are alpha to pi. So if you put the limits, so it becomes sine 2 pi minus sine 2 alpha divided by 2. We know that sine 2 pi is 0. So this terms become 0. So it becomes minus sine 2 alpha upon 2. So let us put the values. So this can be written as, I am talking about this term, square root of Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पहले इंटीग्रेशन का आंसर अपने पास है पाई माइनस अल्फा, तो यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन पाई माइनस अल्फा। सेकेंड इंटीग्रेशन का आंसर ये आया है माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2, क्योंकि हम लोगों ने अपर और लोअर लिमिट पुट किया। और यहां पे देखो ये यहां पे एक माइनस साइन है, हमने ये सिर्फ ये इंटीग्रेशन का आंसर कैलकुलेट किया है, उसमें माइनस साइन आ रहा है। आउटसाइड देयर इज अ माइनस साइन, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट बिकम्स प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2. This is the answer which we got after after solving both the integrations. Now you may well mathematically simplify this equation. मतलब ये Vm बाहर ले सकते, Vm स्क्वायर है, तो ये अगर हम लोग आउटसाइड ले लेंगे, so it becomes Vm and square root of 2 pi, it can be written as 2 under root of pi. If I'm talking about Vm square upon 4 pi, it becomes simply Vm upon 2 root pi, square root के अंदर first term as it is pi minus alpha. This term I have kept it as it is, plus sine 2 alpha upon 2. So this is the value of RMS voltage, that is VRMS. नेक्स्ट पैरामीटर्स एसी इनपुट पावर, ये बहुत सिंपल है। एसी इनपुट पावर इज पीआई, फॉर्मूला इज वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। हम लोगों ने ये वी आर एम एस का इक्वेशन अभी डिराइव किया है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वी आर एम एस। जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। इसका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय आर, स्क्वायर लेंगे तो ये वीएम स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ जाएगा, वीएम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये डिवाइडेड बाय आर है, आर रिमेन्स एज इट इज। और स्क्वायर लेने के बाद दिस स्क्वायर रूट साइन गेट्स वैनिश्ड, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आ गया। दिस इज एसी इनपुट पावर। देन डीसी इनपुट पावर फॉर्मूला इज नोटेशन इज P0, फॉर्मूला इज VDC स्क्वायर अपॉन आर। रेफरेंस के लिए हम लोगों ने मैंने ये VDC का फॉर्मूला लिख के रखा है, वी ऑलरेडी डिराइव्ड इट। VDC इज Vm अपॉन 2 पाई 1 इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा। सो लुक एट दिस फॉर्मूला, इट इज VDC स्क्वायर अपॉन आर, मतलब इसका स्क्वायर लेना है, सो इट बिकम्स Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है, तो ये आएगा Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर और 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीसी आउटपुट पावर। नाउ पावर फैक्टर, द टर्म पावर फैक्टर इज डिनोटेड बाय ईटा, which is ratio of output power to the AC input power, that is P0 upon PI। मतलब ये दो इक्वेशंस का रेशियो लेना है। इट्स वेरी सिंपल। देखो P0 डिवाइडेड बाय PI करना है, तो Vm स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, RR कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई स्क्वायर है और यहाँ पे पाई है, सो 1 पाई टर्म विल रिमेन एज इट इज, तो ये P0 के डिनोमिनेटर में आएगा। और ये 1 प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, मतलब ये आफ्टर परफॉर्मिंग डिवीजन दिस करस्पॉन्डिंग टर्म विल बी 1 प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन पाई। यहाँ पे लिखा है 1 दिस टर्म 1 प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन पाई, सो इट इज P0 अपॉन PI, और अपॉन PI है तो ये टर्म एज इट इज आएगा। दिस टर्म आई हैव रिटन इट एज इट इज। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर फैक्टर। In the question, if it is asked, comment on the power factor. So what comments are you need to write? Alpha is the firing angle. Just now we discussed, by changing the value of alpha, you can control the rectification. So if you make alpha equals to 0, then in that case, this term
this, look at the numerator term. This is cos alpha. So cos 0 is 1. So it becomes 1 plus 1. That is 2 square. It becomes 4. So if alpha is 0, numerator term cos alpha मतलब cos 0 1 होता है, 1 plus 1 2, 2 का square 4, तो numerator में 4 आ जाएगा. Divided by this pi term outside the square bracket remains as it is. अल्फा का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं. सो यहाँ पे आएगा pi minus 0, मतलब only pi term will remain. And if we will put alpha equals to 0, this term sin 2 alpha becomes sin 0 upon 2. Sin 0 is 0, तो ये term vanish होगा. So this becomes 4 upon pi square. This is the maximum value of power factor when firing angle alpha is equals to 0. So this is about the single phase half wave control rectifier, and that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.